In this problem, we have to show that for a solenoid with length much greater than the radius, the first one is the magnetic field at the end point, which is P in the diagram, is half of the magnetic field inside. That is magnetic field inside. This is denoted by B naught in this diagram. So for this kind of a solenoid in which the length is much greater than the radius, the solenoid is like an infinite solenoid. और इनफाइनाइट सॉलिड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंट्रल रीजन में इट इज़ यूनिफॉर्म. तो इन द सेंट्रल रीजन मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, और एज वी गो टूवर्ड्स द एंड तो मैग्नेटिक फील्ड एंड के आसपास जाकर के दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है सॉलिड का दैट इज़ इन द सेंट्रल रीजन. सेकेंड, magnetic flux through the end face is half the flux inside. So the flux lines or flux in this region, which is the central region, and flux through the end, so end flux is half of this flux. We have to prove this. And third, a field line crossing the endmost winding, like crossing like from here, is a straight line perpendicular to the axis. It is crossing something like this, it is going like this, it is going like this, perpendicular to the axis. This is the axis of the solenoid. A line in the central region at a distance r from the axis. Suppose this is a magnetic field line here and which is at a distance r. When it exits, then at exit at a distance √2r from the axis. It exit somewhere here. So it starts from here and it something goes like this, and this distance will be √2 times r from the axis. So for the first problem, पहले प्रॉब्लम को करने के लिए we can use the formula of magnetic field and we can put the values in that and can find the magnetic field at point P. और इसके अलावा मैं यहाँ पर इसमें इंटरेस्टेड हूँ सुपरपोजिशन यूज़ करने में. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यहाँ पे यूज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे यहाँ पर. तो फिलहाल मैं इसको दोनों मेथड से कर रहा हूँ. आई एम डूइंग इट विद फार्मूला एंड सुपरपोजिशन. जो फार्मूला होता है दैट फार्मूला गोज लाइक दिस. Suppose if this is a solenoid, and let's say this is the axis of the solenoid. Suppose this is the axis of the solenoid. So magnetic field at a point on the axis, suppose यहाँ पे ये कोई point है, so magnetic field at this point can be written in terms of these two angles. This is the line connecting the endpoints. Suppose this angle is alpha and this angle is beta, then magnetic field at a point on the axis is given by, at this point on the axis, this is the point at which magnetic field I am writing. This magnetic field is mu naught Ni by 2, where small n is number of turns per unit length and I is the current in the solenoid, and this is equal to mu naught Ni by 2 multiplied with sine alpha plus sine beta. If this is infinite solenoid means length is much greater than the radius, then in the central region, alpha and beta both tends to pi by 2. So alpha and beta both tends to pi by 2 for ideal solenoid, infinite solenoid in the central region. So this will be sine alpha will be 1, sine beta will be 1, so 1 plus 1 will be 2, and magnetic field will be mu naught Ni in the central region, which is given as B naught. And at the ends, it will, if I look from this end, so it will be like semi-infinite solenoid, and this is the end, and beyond which in this direction towards right, it is extending towards infinity, extending to the infinity. So at the end, suppose I am talking about this end. For this end, alpha will be 0 and beta will tends to pi by 2. If I talking about this end, so for this end alpha will be pi by 2 and beta will tend towards 0. So at the ends we can find magnetic field as B at the end is equal to simply mu naught Ni by 2. Mind you, this is the magnetic field calculated on the axis. So B is mu naught Ni by 2 and this is B naught by 2. So answer for the first part will be B naught by 2, and we can use superposition to prove this, that magnetic field is B naught by 2. So from superposition, I am using method number 2 now, superposition. Using superposition,
Suppose this was the solenoid of length L with radius is equal to r. Suppose this is length L solenoid with radius is equal to r, and let us bring another solenoid here. In this solenoid, the magnetic field is towards left, as on the figure. Magnetic field is something like this, and for this kind of magnetic field, the current in the turns should be something like this. If this is a turn here, then for this magnetic field which is towards left in the diagram, the current should be like this. In front, current is going up, and in the back, current is moving in the downward direction. So current should be like this. If current should be like this, then magnetic field will towards left. So I am bringing another solenoid of similar solenoid, identical solenoid, and I will place that solenoid at the end, and then we will have a solenoid of length 2L. Suppose for superposition, I am bringing another solenoid. So this is the one solenoid and another solenoid kept like this. It is just kept like this, and this is the common axis. Current in both going like this. So magnetic field, suppose due to one solenoid, the magnetic field is something like this. For suppose this is solenoid number 1 and this is solenoid number 2. For solenoid number 1, the magnetic field, suppose this is equal to B1, and suppose for solenoid number 2 the magnetic field is B2, and obviously both B1 and B2 will be equal. So B1 and B2 both are equal. Suppose this is equal to the B end. Why these two are equal? Because these two are identical solenoid, and if I place this solenoid here, so it will become a central region. This region which is shown in this diagram will be the central region for this solenoid of length 2L, and this B1 and B2 after adding should give the magnetic field equal to B0. So B1 plus B2 must be equal to B0, because this is that the same ideal solenoid. B1 plus B2, this should be equal to B0, and this is twice B end, this is equal to B0, and B at the end will be B0 by 2. तो अगर यहाँ पे मैंने दो सोलनॉइड आइडेंटिकल सोलनॉइड्स को अगर यहाँ प्लेस कर दिया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड B0 होता है, B0 डिपेंड्स ऑन B0, दिस इज अ कांस्टेंट, एंड n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. So it is not total turns, it is turns per unit length, it is turn density. So obviously n will be n in case of this two, in case of superposition of these two also, and I will be I. So this B1 plus B2 must be equal to B0, and this would be equal to like this, B end is equal to B0 by 2. So using superposition we can easily prove that at the ends magnetic field is B0 by 2. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एंड फेस इज हाफ ऑफ द फ्लक्स इनसाइड. तो सपोज इसके लिए अगेन मैंने यहाँ पे ये दो सोलनॉइड्स ले लिए हैं, दोनों आइडेंटिकल सोलनॉइड्स, और एंड्स पे क्योंकि अंदर में आप देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड नियरली पैरेलल लाइंस से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, पैरेलल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस. लेकिन जैसे जैसे एंड्स की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कर्व हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉन यूनिफॉर्म एट द एंड्स. और अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को मिला दूँ तो मिलाने के बाद में ये जो रीजन है वो एक सेंट्रल रीजन यहाँ बन जाएगा, एंड इन दिस सेंट्रल रीजन मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अगेन यूनिफॉर्म इक्वल टू B0. तो अगेन यहाँ पर इन दोनों को हमें यहाँ पे कंबाइन करके देखना होगा, सुपरपोजिशन यहाँ पे यूज़ करना होगा. सपोज दिस इज़ द कॉमन एंड जहाँ पे इनको मैंने मिलाया है, तो जो राइट में यहाँ पर सोलनॉइड है, तो राइट वाले सोलनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज अलोंग द एक्सिस एंड दिस इज लाइक दिस. सपोज दिस इज लाइक दिस, it is like this. So this is the magnetic field due to right solenoid.
for the left solenoid. So for left solenoid, the magnetic field is something like this. This is for the left solenoid. So magnetic field is something like this. So this is for the left solenoid, and addition of these two must give the uniform magnetic field along the axis towards left. So for that the horizontal component of these two, suppose I am taking at a point, I am taking the magnetic field at a point due to this one and due to other one. Suppose these two are magnetic field at a point, and for that the horizontal component must be equal because of symmetry. So these two solenoids are producing the same horizontal means the component along the axis, parallel to the axis. So this is the component which is parallel to the axis, and this is the component which is parallel to the axis, and these two will add up, and the components which are perpendicular to the axis, obviously this two should be cancelled, this b perpendicular should be cancelled. So this is twice b parallel if I add this two. So this is twice b parallel to the axis. This should give me b naught, and this b parallel, this is equal to b naught by 2. So in general, at the end point, the horizontal or along the axis component, are all equal to b naught by 2. This component is b naught by 2, this component is b naught by 2, this component is b naught by 2. All these components which are parallel to the axis are b naught by 2 here. So from here we can easily now find the flux in the interior or in the central region where magnetic field we can treat as uniform. So this is the flux, and this flux which is in the interior region, in the central region, flux inside, because magnetic field is uniform, so we can easily find b naught into pi r square. And at the end, suppose at this cross section which is at the end, so magnetic field will be due to this parallel component, or this perpendicular component perpendicular to the axis will be tangential to this area, so this will not give rise to any flux. So flux at the end will be this parallel component which is perpendicular to this surface. So this is b naught by 2 and multiplied with pi r square. So obviously this is phi inside divided by 2. This is half of the flux inside. So what does it mean? यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलता है कि this is half flux. Half flux means half of these lines which are present in the central region are not exiting through this end phase. End flux से end जो phase है यहाँ पे end phase से all the lines are not passing through. Some lines are exiting this solenoid. कुछ lines ऐसी हैं जो solenoid से बाहर निकल जाती हैं end phase पे पहुँचने से पहले ही. अगर हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जाएँ इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में कुछ इस तरीके की हैं, जिसके लिए एक अलग डायग्राम यहाँ पर मैं लेकर के आ रहा हूँ. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर समथिंग लाइक दिस. दिस आर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. यू कैन सी फ्रॉम हियर, these are the uniform field lines, and as we go to the end, the magnetic field lines becomes curved, and you can see here some field lines are out of this solenoid. Some field lines are out of this solenoid before they reach the end phase. End phase से पहुंचने से पहले ये जो लाइन्स है वो लाइन्स यहाँ से बाहर निकल जाती हैं. और कितनी लाइन्स बाहर निकल जाती हैं, तो यहाँ से जो फ्लक्स पास हो रहा है, दिस फ्लक्स इज half of this flux. You can see the lines are now not that much close. Lines are density of lines is reduced here, and obviously if density of lines is reduced, then flux should be reduced, and this flux is exactly half of this flux. That means half of the lines are out like this. जो आधी लाइन्स हैं, हाफ लाइन्स हैं, वो हाफ लाइन्स इस तरीके से यहाँ से बाहर निकल चुकी हैं और हाफ लाइन्स ही यहाँ से बाहर निकल पा रही हैं. So this is the concept of half flux. Half flux is living through this end phase. Now coming to the next question. The next question is, a field line crossing the endmost winding is a straight line perpendicular to the axis of the solenoid. And in the diagram, let us move to the diagram. In the diagram, it is shown here that
this field line which is passing through this endmost winding is perpendicular to the axis. It is just going in a straight line. It is something going in a straight line like this. So how it is going in a straight line? Something like this, which is perpendicular to the axis. You can also see from symmetry here that magnetic fields lines are something like this. Here the direction is something like this, here the direction is something like this, and after this end point the direction is something like this. So there should be a point at which the direction should be exactly like this. So it is like this, it is turning, and at this junction we can just see that from symmetry that this kind of a line should be at the end only, and before the end lines are going something like this, and after the end lines are going something like this. So this can be one way to see this using symmetry, and another way is by contradiction. इसको contradiction से we can also prove कि lines जो है वो इस तरीके से ही यहाँ पर जानी चाहिए. तो how can we use the contradiction? Again we will use superposition, and we use two solenoids, two similar identical solenoids to prove our statement. Let us draw the two solenoids here. तो ये दोनों solenoids मैं यहाँ draw करने जा रहा हूँ. तो suppose ये एक solenoid और इसी के बगल में यहाँ पे ये दूसरे solenoid में draw कर रहा हूँ. This is the other solenoid and this is our end face, and this is the end face for this. And again I am showing how the current is flowing. This is suppose a loop, and in this loop current is flowing like this. If current is flowing like this, then magnetic field will be somewhat like this, and again in this also the magnetic field will be somewhat like this. So at the end, if magnetic field I am assuming that magnetic field is not like this as shown in this diagram, which is correct here. Magnetic field suppose is not like this. I am assuming magnetic field is something like this. If magnetic field is not if direction of magnetic field is not like that, then it can be like this. So I am assuming the magnetic field is directed along this red arrow. If magnetic field is like this at this end face, then for the another similar solenoid, इस ये जो solenoid दूसरी वाली solenoid है, इसका ये वाला जो end face है, इस end face पे जो magnetic field का direction होगा, magnetic field का direction यहाँ पे किस तरीके से आएगा. तो इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो. जो लॉजिक हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसमें हमने इसको ऐसे अज्यूम किया है, तो ये लाइन इस तरीके से घूमती हुई आएगी एंड लाइन मस्ट फॉर्म क्लोज लूप्स. तो क्लोज लूप्स बनने चाहिए यहाँ पे. तो lines will go and will enter something like this. It should enter something like this. So we can make out that the magnetic field here should be something like this. If I am assuming here it is something like this, then here it should be something like this. And अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो ऐड करने के बाद में माइंड यू दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिस पॉइंट इज आउटसाइड दिस solenoid. दिस पॉइंट इज आउटसाइड दिस solenoid, and we know that magnetic field outside due to solenoid is 0. So magnetic field outside should be 0. And if I add these two solenoids, then we can easily see that these two components will add up. This is like this and this is also like this. So these two components will add up and magnetic field will not be 0. So there is a contradiction here. So magnetic field must be like this. Magnetic field for this solenoid must be like this. Then only these two can be cancelled. So यहाँ पर ये इस केस में यहाँ पे कैंसिल हो पाएंगे. तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूफ हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो एंड वाइंडिंग पे होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. इट इज़ गोइंग लाइक दिस, इट इज़ गोइंग लाइक दिस. और फ्रॉम सिमेट्री वी कैन ऑल्सो सी मैग्नेटिक फील्ड इसके पहले मैग्नेटिक फील्ड इज़ लाइक दिस, एंड आफ्टर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ लाइक दिस. सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस. इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है उस पर देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अ लाइन इन द सेंट्रल रीजन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस एग्जिट फ्रॉम द एंड एट अ डिस्टेंस √2r फ्रॉम द एक्सिस. सो लेट अस सी हाउ वी कैन प्रूव दिस. सो दिस इज द एक्सिस, this is the axis, and suppose I am concentrating on
this one. So let us concentrate on this one, and distance of this from the axis, let's say this is equal to r. So distance will be r, and if I take this area, then in this area the flux will be equal to this much area at the end phase. तो एंड फेज पे ये जो एरिया यहाँ पे मैंने लिया है, इस एरिया से उतना ही फ्लक्स पास होता है जितना फ्लक्स यहाँ पर इससे पास हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं फ्लक्स यहाँ पे इक्वेट कर दूँ तो उससे यहाँ पर ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है कि यहाँ पर ये जो रेडियस होगा वो रेडियस यहाँ पे क्या बनेगा। सपोज दिस रेडियस इज़ r डैश। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स लिखता हूँ तो दिस फ्लक्स विल बी b0 मल्टीप्लाइड विथ पाई r स्क्वायर, और जितनी भी लाइंस यहाँ पर हैं, ऑल द लाइंस, जितनी भी लाइंस, क्योंकि लाइंस यहाँ पे सारी की सारी लाइंस तो ड्रॉ नहीं की जाती हैं, लाइंस तो बस इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। सो जितनी भी लाइंस इस एरिया से क्रॉस कर रही हैं उतनी ही लाइंस इस एरिया से भी क्रॉस कर रही हैं, फ्लक्स विल बी इक्वल। लेकिन यहाँ पे जस्ट अभी हमने देखा है कि जो ये एंड फेस का एरिया है, एंड फेस के एरिया के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो b0/2 हो जाता है, दैट इज़ b0/2। सो दिस इज़ b0/2 pi r dash square. This would be equal to b0 into pi r square. So from here r dash is equal to √2 into r. तो इसका मतलब यहाँ पे √2 into r के बराबर हो जाता है। और इससे आप वन मोर थिंग, एक और चीज़ यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो कि सपोज जो फ्लक्स पास हो रहा है वो यहाँ तक पास हो रहा है और ये डिस्टेंस यहाँ पर r के बराबर है, और कौन सी लाइन यहाँ से निकल रही है, ये वाली लाइन, इसके ऊपर की जितनी भी लाइंस हैं, वो पहले ही निकल जाती हैं, ठीक है, वो एंड फेज से पहुंचने से पहले निकल जाती हैं। तो इसमें ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो लाइंस हैं वो लाइंस यहाँ पे, ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, एक्सेस से ये डिस्टेंस कितना होगा जो कि यहाँ पर एंड फेज से निकल रही है। तो वैसा ही रिलेशन एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। तो सपोज अगर मैं इसको यहाँ पर r डैश बोल देता हूँ तो r डैश और r, तो दिस r विल बी इक्वल टू r डैश √2 एंड दिस r डैश इज इक्वल टू r/√2। तो एक्सिस से r/√2 डिस्टेंस पे जो लाइंस हैं, दोज लाइंस विल बी एबल टू क्रॉस फ्रॉम द एंड फेस। तो वो एंड फेस से यहाँ पर क्रॉस कर जाएंगी। उसके ऊपर ये वाला जो रीजन है, r/√2 से ऊपर वाला जो रीजन है, उसके जो लाइंस हैं वो लाइंस एंड फेस से पहले यहाँ से बाहर निकल चुकी होंगी। तो हाफ ऑफ द फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस एंड फेस एंड हाफ रिमेनिंग फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू द साइड्स ऑफ दिस सोलोनॉइड्स, पहले ही यहाँ से ये बाहर निकल चुकी होंगी। सो इन दिस वे वी गॉट द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन, वी प्रूव्ड ऑल द स्टेटमेंट्स।